Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today's our topic is an introduction to security valuation. Valuation of security. Time value of money affects the valuation of securities. We apply the time value of money concept to find out the value of different type of securities. Different type of security that will be covered are debentures, bracket bonds, preference share, and equity shares. What is security? A financial security is some type of financial instrument that has recognized financial worth. Usually referred to as simply as securities that a financial security can take on several forms. Generally, a financial security will have the potential to generate some additional return above face value in the future. Thus, we can say that the value of security is the present value of the future benefit associated with it. So let's see the example. For example, an investor accepts an annual return on of 1,000 for the next 10 years. Find the current value of assets with interest rate of 15%. So how can we find? First of all, what is our future value? Sorry, what is our principal amount is 1,000. Our N is 10 and our interest rate, we can say our I is 15%. So that is the formula. So our A is 1,000, and how can we find the PVIFA? We find the PVIF in the table. So हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर 10 हमारा N है और 15 हमारा क्या है I है. हम 10 नंबर N हमें हम 10 में और रेट इंटरेस्ट रेट में हम 15 में जाकर अपनी PVIF की वैल्यू देखेंगे. जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे. उसको हम अपने जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो है 1,000 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूचर कैश फ्लो मिल जाएगा जो है 5019. मतलब आफ्टर 10 ईयर या अगले जो 10 सालों का हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, 5019 है. So the valuation of security is still continue. Value now the next now that what is the valuation of debenture? In corporate finance, the term is used for a medium to long-term debt instrument used by a large companies to borrow money. In some countries, the term is used interchangeable with the bond, loan, stock, or not. Important term associated with debentures: the face value, the amount on which the issuer pays interest, and which most commonly has to be repaid at the end of maturity. It is 100 or 1,000. What is the coupon rate? Coupon interest, the interest rate that issuer pay to the bond holder. ठीक है, जो इशूअर पे करता है किसको, बॉन्ड होल्डर को. यूजली दिस रेट इज फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, ये कब तक फिक्स होता है, जब तक बॉन्ड की लाइफ हो, जब तक वो मैच्योर ना हो. So now, what is maturity date? The date on which the issuer has to repay the future value as long as all payment has been made. The issuer has no more obligation to the bondholder after the maturity date. The length of the time until the maturity date is often referred to as the term or tenor or maturity of bonds.
So valuation of securities is still continue. Debenture valuation model is an investor of debenture is entitled to get the following two things: interest at the fixed rate till maturity. ठीक है, till maturity, जब तक वो बॉन्ड मेच्योर हो, वो सिक्योरिटी मेच्योर हो, तब तक इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है. इसमें पहली चीज ये होती है. Second one is this principal amount of the debenture on its maturity. So that is the, we can say that is the formula of valuation of debenture. VD is the present value of the future interest flows plus PV stand for present value of the future value paid at the maturity. वैल्यूएशन डिबेंचर इक्वल टू, अब इसका फार्मूला है ये, PVIF मल्टीप्लाई बाय एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट. जो भी आपकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होगी उससे हम PVIF जो हम फाइंड आउट करेंगे टेबल से वो मल्टीप्लाई होगा. देन प्लस होगा PVIF मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, PVIF को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो दोनों के आंसर आ जाएंगे उसको आप लोग क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे. A debenture of with FV equal to rupees 100 carrying an interest rate 15% will mature in a 5 year. The required rate of return of debenture is 10%. Calculate the present value of debenture. So what is your annual interest inflow is 15. Face value inflow at maturity is 100. PVIF हम किस तरीके से टेबल से फाइंड आउट हमने किया है, 5 में जाके 10 पर एन, हम नंबर ऑफ ईयर्स में 5 में जाएंगे और हम क्या करेंगे, अपना रेट कहाँ देखेंगे, 10% में. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.791. ठीक है, अब PVIF हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें. PVIF में भी हम क्या करेंगे उसी तरीके से, एन हमारा 5 होगा, आई हमारा 10 होगा, उसमें हम उसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.621 आ जाएगी. ठीक है, फिर उनको उसी तरीके से 3.79 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से. 15 हमारा क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है. फिर 0.62 को 621 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. 100 हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू है. तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 118.965, ये हमारा आंसर आ जाएगा. Relation between the interest rate, coupon rate, and the required rate of return, that means discount rate. Coupon rate can be denoted by C, and I RRI discount rate can be denoted by K. Okay, the condition is that let face value of bond equal to 1000, let's K equal to C equal to about 15%. मतलब K यहाँ पर CA की बात कर रहा है, यहाँ पर वो 15 है. We calculate the value of the debenture. ठीक है, let's K equal to 12 and C equal to 50. We calculate the value of debenture. इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछला अमाउंट किया था, ये भी आप लोगों को अभी मुझे करके दिखाना है. मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, ये अभी के भी आप सॉल्व करके और शेयर करें मेरे साथ. थैंक यू. आप ये शेयर करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करेंगे.